Good morning, students. Today we'll discuss about the class Amphibia. Last class we have discussed about the chondrichthyes and ostrichthyes, and today we'll discuss about class Amphibia, reptiles, avids, and mammals. Okay. So amphibia. What is the meaning of this name? Indicate here. Amphi means dual, means both terrestrial as well as aquatic. Means pani में भी and as well as the land may be, they need both the situation, both the habitat to complete their life cycle. Okay, so that's why amphi means dual and bios means life. So amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitat. Aquatic means the pani ki condition, or terrestrial means land. So most of them have two pairs of limbs and body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some time. Okay, some cases the tail is present. So here you can see here limbs are here, two pairs of limbs are present. Sometimes tails are there, sometimes it is not. Here also the limbs are present, and their body is divided into head and trunk. No neck is there. The eyes have eyelids. The amphibian skin is moist, without any scale. कोई scale नहीं रहता है इसके ऊपर. Tympanum represents the ear. इसमें कोई ear की तरह ear तो है, मतलब ear as such ear या ear lobe नहीं है. तो उसमें क्या होता है, एक membrane होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, tympanum, है ना. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts means अलग अलग इसकी opening नहीं है. एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के लिए, तीनों के लिए एक ही ओपनिंग, कॉमन चेम्बर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोआका, एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर. जो कॉमन चेम्बर है इन तीनों ट्रैक्ट के लिए, एक यूरिनरी, एक एलिमेंट्री, एक रिप्रोडक्टिव, दैट इज कॉल्ड क्लोआका एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर. रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स भी हो सकता है, पानी में जब रहेगा तो गिल्स, लंग्स और थ्रू स्किन. ओके, लंग्स जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेगा तो लंग्स के थ्रू ही दे आर respiring. The heart is 3 chamber, 2 auricles and 1 ventricle. So दोनों ऊपर का चेम्बर और एक नीचे का चेम्बर है ना. तो that is called actually 3 chamber heart is there. These are cold blooded animals, means their body temperature depending upon which one, outside temperature or external temperature. They cannot maintain their temperature according to, means we can say the body temperature they cannot maintain. That's why they have to go for hibernation or estivation. For maintain their, we can see all the metabolic activities. So these are cold-blooded animals. Sexes are separate. Now fertilization is external. They are oviparous, means they are laying the eggs. Their male and female bodies are different. And development is indirect. Means why it is, because the larval stage is there. All of we know in case of the toad and the frog, they are actually having the tadpole. The larval stage is known as the tadpole here. So that's why development is indirect, and that larval stage is there, and they are actually respiring through which one, 3 conditions. Either skin के through भी हो सकता है, lungs जब land में रहेगा, और gills जैसे tadpole के लिए क्या होता है, gills के through they are respiring. Heart 3 chamber होता है. They are poikilothermous, means they are actually cold blooded animal. Their body temperature is maintained by which is actually controlled by which one, external जो outside the atmosphere. So they have to go for hibernation in the winter, cold winter, or extreme cold condition, or estivation in the extreme hot condition. Example, what are there? Bufo is there, toad, Rana tigrina, that is frog, hyla, tree frog. I will show you the figures here. So I already told you a cloacal aperture. Look at here, this is the cloacal aperture here, and this is the body and trunk. You can see here, this is the actually the head is there, and this is the trunk is there, and they are actually this is actually hyla, that is called the tree frog. This is actually the Rana tigrina. This is Rana tigrina, and this is actually known as this is toad, that is bufo. Okay, so these are the example. Actually here salamander example is given to us. This is salamander. Actually salamander is there, and ichthyophis, that is limbless amphibia. So these are actually the examples of which one, amphibia. Next one we are coming for the reptilia, and in reptilia the class names that is refers to the creeping or crawling.
मीन्स व्हेन रिपेयर मीन्स रेप्टिलिया रिपेयर से आ रहा है, तो रिपेयर का मतलब ये है कि दे आर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली रेप्टिलिया. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल ही होता है एनिमल्स, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय, यू कैन सी हेयर द ड्राई कॉर्निफाइड क्रोकोडाइल को आपको तो सबको ही पता चले, तो यहाँ पे भी टॉर्टोइज जो है, चिलोन जो है, इसके हिसाब से भी आप बोल सकते हो टार्टल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका भी स्क्यूट जिसको बोलते हैं कि ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होता है एंड ऑफ एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूट्स बोलते हैं, है ना. एंड इसके बाद हम आ जाते हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जस्ट लाइक द एम्फीबियंस. टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 pairs. हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर, उसी की तरह ही है, बट वन एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल हैव 4 चेम्बर हार्ट. रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्मस मीन्स वही है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल. स्नेक एंड लीजर्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट. अब तो छोड़ता है स्किन, पता है इसको, तो स्नेक जब छोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन कास्ट बोलते हैं. सेक्सेस सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. दे आर ओविपेरस मीन्स दे आर लेइंग द एग्स एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मीन्स विदाउट एनी लार्वल स्टेज. ठीक है. व्हाट आर द एग्जाम्पल हियर? चिलोन, you can see here चिलोन, टार्टल is there, testudo, tortoise. I will show you the figures here. Actually एग्जाम्पल अगर आप देख लोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. ये देखो, testudo, that is tortoise here. This is tortoise. This is चिलोन, that is turtle here. Crocodiles are there, and as well here also so many are there. There's a draco. Draco means flying dragon, है ना. This is called the flying lizard जिसको हम लोग बोलते हैं. Or it is coming about the Heloderma is here, as well as the Ophiosaurus is there. So these are the so many examples are given to us. Crocodilus is there, alligator is there, Hemidactylus, that is called the wall lizard, है ना. Hemidactylus, that is called wall lizard. Draco तो already I told you, ये रहा Hemidactylus, that is wall lizard, जो आपके दीवार में दिखते हैं जो घर पे, that is Hemidactylus. Tree lizard, chameleon, है ना. Chameleon it is given here also. Chameleon की फिगर यहाँ पे है. क्रोकोडाइल है ना. दिस चिलोन इज हेयर एंड क्रोकोडाइलस इज देयर. कैलोटिस, ग्रीन लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं. एलिगेटर, हेमिडैक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक जैसे नाजा हो सकता है ना. उसके बाद जैसे बैंगारू हो सकता है, भाईपेरा हो सकता है. दिस आर द एग्जाम्पल. अच्छा, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द एबिस. एबिस हु आर देयर? द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एबिस आर द प्रेजेंस ऑफ द फेदर्स, and most of them can fly except the flightless bird. What is flightless bird? Ostrich. You can see the figure here. Ostrich. अच्छा, they possess beak and the forelimbs are modified into wings. उसके पास beak होता है और for flying purpose they have wings. The hind limbs generally have scales and modified for walking, swimming, clasping the tree branches. ठीक है, जैसे बर्ड्स है तो उसको ट्री ब्रांचेस को क्लैस्प करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, इसके लिए क्या होता है ना, हाइंड लेग्स जो है देर एक्चुअली मॉडिफाइड, है ना. फॉर एंड द स्केल्स आर देयर. स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड्स. इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं रहता है, ड्राई होता है. एंड द वेल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल. एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड मीन्स बोन से बना रहता है एंडोस्केलेटन. लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, क्योंकि उसको उड़ना होता है तो बॉडी वेट मस्ट बी लाइट इन वेट, and that's why the bones are actually hollow and filled with air cavities. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन. The bones are known as pneumatic. Digestive tracts of the birds are the additional chambers, crop and gizzard, because उसके पास कोई टीथ नहीं होता है, तो इसलिए क्रॉप और गिजर्ड जो है उसका चर्निंग के लिए और डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हेल्प करते हैं. तो डेफिनेटली क्रॉप एंड गिजर्ड एक्स्ट्रा उसके एडिशनल चेम्बर्स है. हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चेम्बर. आपने यहाँ पे देखे हैं हार्ट इज 3 चेम्बर, एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल है. And here heart is actually 4 chamber, completely 4 chamber, and they are warm blooded. Homeothermus, that is called homeothermus. This is called poikilothermus, means they are cold blooded animals, and they are actually, we can say about the body is covered by the, we can say scutes here or scales, cornified scales are there. यहाँ पे feathers से रहता है, इसका body is covered by the feathers, and कोई glands वगैरह नहीं होता है, dry skin होता है. warm blooded animals है, they are able to maintain the constant body temperature, क्योंकि their body temperature is not depending upon the external temperature, external climate. Their body temperature actually they can maintain their body temperature, and they are actually respiring through the lungs. और उसके साथ साथ एयर सेक्स प्रेजेंट होता है, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, क्योंकि दे हैव टू fly, that's why they need more amount of oxygen
and their body weight also will be becoming light by this air sacs. So air sacs connect to the lungs and supplement respiration को वही ज़्यादा respiration के लिए supplement भी देते हैं. Sexes are separate, means male female bodies are different, separate are there, and fertilization is internal. They are oviparous, laying the eggs, and development is direct. मतलब कोई larval stage इसमें नहीं है, direct development हो जाता है ना. तो ये हो गया बार्ड्स के लिए. वही है कि जो फोर लिम्स है, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, एंड द हाइंड लिम्ब विद द वी कैन से दे आर मॉडिफाइड फॉर द स्विमिंग, वॉकिंग इन दैट वे, एंड दे हैव द एक्चुअली scales there. Their body do not have, the body skin is dry without any glands, but at the tail end the glands, oil glands are present, and they have the beak, they have the crop and geyser extra, they have air sacs, they are respiring through lungs. These are the actually example given to us as a neophron, and then it is coming as Struthio. This is Struthio one, and this one Psittacula, that is actually parrot, Pavo, that is actually peacock. So many examples are there. Here you can see. Look at here, Columba, that is Kabutar actually. Pavo, that is the moor here, peacock, and this is actually coming about the Iraha, Corvus, that is the crow. Penguin is there. Psittacula is actually parakeet, तोते जिसको बोलते हैं, and Struthio is the ostrich here. So these are the example actually, and for the birds. Next one here, this is Tyto alba. Next one we are coming for the ABC is over. Now we are coming for the mammals. So what are mammals here? So here some examples are given to us. Corvus, crow, Columba, pigeon, Psittacula, parakeet or parrot, Struthio, ostrich, Pavo, peacock, and Aptodontids, that is penguin, and Neophron is a vulture. Okay, Neophron is given here. Okay, now we are coming for the mammalia. They are found in various variety of habitats. जैसे polarized का भी मिल जाएगा, desert में मिल जाएगा, mountains, forest, grasslands, dark caves. Some of them are adapted to fly or live in water. मतलब ये mammals है, लेकिन they can live in water also as well as they can fly also, and they can adapt to fly also. Yes, bat. The most unique mammalian characteristics is the presence of the milk producing gland, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, mammary gland बोलते हैं. And this mammary gland, they are actually nourishing the young ones. This milk is required for the nourishment of the young ones. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, or flying. So same thing is coming here. The skin of mammals is unique in producing the hair. Skin is actually covered by the hair. जैसे एबीस में क्या होता है, फेदर्स से, यहाँ पे हेयर्स में एक्सटर्नल ईयर और पिनी इज प्रेजेंट. ये सबसे बड़े मार्किंग पॉइंट ये है कि मैमरी ग्लैंड्स एंड पिनी, प्रेजेंस ऑफ पिनी, एंड एक्सटर्नल जो ईयर लोब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनी बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन द जॉ, दैट इज इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऑल ऑफ यू नो दैट वन. And heart is fourth chamber. They are homeothermos, that means they are actually maintain their body temperature. Warm blooded animal, they can maintain their body temperature whatever the temperature outside. Okay, and heart is fourth chamber, that's why double circulation is also there, and two atrium and two ventricles are there. There is total separation of the oxygenated blood and deoxygenated blood. Respiration is by lungs, sexes are separate, and fertilization is internal. ओके, तो ये हो गया आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज. तो रेस्पिरेशन लंग्स है उसके, दे आर विविपोरस, मीन्स दे आर गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, विद सम एक्सेप्शन, जैसे प्लाटीपस जो है ना, ऑर्निथोरिंकस. तो ये ऑर्निथोरिंकस जो होता है दैट इज एक्चुअली एक्सेप्शन, दे आर ओविपेरस लेइंग द एग्स, बट दो दे हैव द मैमरी ग्लैंड तो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ओविपोरस है. एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं है. जैसे ओविपोरस में क्या आएगा, ऑर्निथोरिंकस, दैट इज प्लाटीपस. विविपोरस में क्या आएगा, मैक्रोपस, कैंगारू आएगा, टेरोपस, दैट इज फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस, कैमल, है ना. दिस वन इज कमिंग अबाउट द मैकाका, दैट इज एक्चुअली मंकी, रेटस, that is rat, canis dog, felis cat, elephas, that is elephant, and equus, that is horse, and delphinus, that is common dolphin. So these all are example are given here. So you can see this is actually platypus, this is platypus, that is actually laying the egg. Being a mammal, they are actually laying the egg. Okay, kangaroo is here, and then it is coming about the all these are there. Macaca is here, Macaca mulatta, and then this gorilla. These are actually rectus. It is coming here, rectus. This is actually Scotophilus, the small bat is here. This is a anteater is there, scaly anteater. And then it is coming about the Oryctolagus,
and Funambulus, that is actually Funambulus, that is squirrel. These are actually example of that is actually whale, blue whale, and this is actually comes out the dolphin. So it is these are the example of which one mammals here. Okay, so these are our chapter is over, and next day we will give about the question answer as well as some differentiation. Okay.